Hello friends, this is Nirav Da, founder director HV Desai Competitive Exam Center Pune. It is said that if you fail to plan, you plan to fail. अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हो, आपको आईएएस आईपीएस बनना है, बट आपके पास राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपने अभी तक यूपीएससी एग्जाम को ठीक से डिकोड नहीं किया है, देन माय फ्रेंड्स यू रिक्वायर क्लैरिटी, बिकॉज विदाउट क्लैरिटी हमारा सक्सेस के चांस बहुत कम हो जाते हैं. For all the aspirants who are planning to give the UPSC Civil Services examination in 2025, 2026 or later, we have brought a 3-day workshop on UPSC preparation. ये वर्कशॉप आप अटेंड करने के बाद आपको क्लैरिटी आएगी and then you can have greater chances for success in the examination. This workshop is going to start on 13th of May. Day 1 को हम एग्जैक्टली यूपीएससी का सिलेबस क्या है, व्हाट इज प्रीलिम्स, व्हाट इज मेंस, व्हाट इज इंटरव्यू, व्हाई देयर इज सो मच ऑफ फेलियर रेट इन यूपीएससी, ये सारा कुछ डिकोड करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगर हम 2025 में एग्जाम दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, देन हाउ वी शुड प्लान. In day 2 we are going to focus on very important topic, that is how to choose the optional subject. क्योंकि हमको पता है कि out of 1750 marks 500 marks are dedicated for optional. तो right optional choose करना बहुत ही ज्यादा important बन जाता है. So on day 2 we are going to focus on the optional subject. Also on day 2 we are going to do a very important topic, that is how to select the right sources, right book list for UPSC preparation. In UPSC ये बोला जाता है कि instead of reading many books, if you read the same book multiple times, then your chances of success increases. But for that you need to have the right sources, the right book list. तो हम पूरे book list को डिटेल में डिकोड करेंगे on day 2, which is going to be on the 14th of May. On 15th of May, that is the day 3, we are going to cover how to basically deal with current affairs. बहुत सारा confusion है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, इसके नोट्स बनाए ना बनाए, and how to revise current affairs. तो इसके बारे में हम डिटेल में एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे. At the same time, we will also talk about how to start answer writing, how to do answer writing, and how to improve answer writing, because we all know in UPSC answer writing is the main factor which leads to our success, right? On day 3 we'll also talk about interview skills. तो अगर आप ये 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो, आप आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में क्लैरिटी लाना चाहते हो, then you need to register today, because we have got limited seats. This workshop is going to be available both online and offline modes. I would love to see you all for this workshop. Best of luck. See you at the workshop. Jai Hind.